क्या हुआ, 565 राज्य रहा है वो ब्रिटिश राज का अंग नहीं। काश्मीर राज्य था, स्वतंत्र था। नाइजाम राज्य था, स्वतंत्र था। ट्रावणकोर कोची स्वतंत्र था। ग्वालियर स्वतंत्र था, बिकनी स्वतंत्र था। ऐसा राज्य 565 राज्य थे। अब अंग्रेज ने कहा आप लोग राजा है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था उस में, चाहे तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, नहीं चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, ये दोनों में चाहे तो आजाद रहो। हमारा दादा, हमारा पिताजी, हमारा दादा स्वतंत्र सेनानी थे। हम भी बचपन में सुभाष चंद्र बोस सेना में सदस्य था, लाठी चार्ज था मेरे ऊपर अंग्रेज का, गाँव में अंग्रेज था। वो कहते थे आशेद हिमाचल पर्यंत सारे हिंदुस्तान एक झंडा का नीचे आएगा, एक संविधान के नीचे आएगा, एक पार्लियामेंट के नीचे आएगा। ये संभव है क्या? ये हुआ कोई कल्पना नहीं किया 565 राज्य भारत में शामिल हो गए। दूसरा ये है पांडिचेरी फ्रेंच वाले के नीचे है, हिंदुस्तान में नहीं है। गोवा पोर्चुगीज वाले के नीचे है। तो कोई कल्पना कर नहीं कर सकते थे। Nobody could think or imagine India will have one flag, one parliament, one country, in spite of languages, religions, culture, but all this. So Pandit Jawaharlal Nehru in 1947, he took the leadership of this country. इस देश में ये होना चाहिए, भारत 20 साल आगे कैसा होना चाहिए। Myself, Dr. Vishwanath, VP Singh and people, Mohini ji and others, we have seen that country after independence joining together hands to take this country ahead. So on 2013 November 20th, I feel very proud that a nation which was in slavery before 47, the nation has risen to such heights thanks to the leaders in India and people of India. It is the people of this country who made this country great. And if I am proud of the country, we are proud of the contribution of all of you for this nation. So it's not time to make a long speech, but I want to tell you one thing. There are so many people who rendered invaluable service. महत्वपूर्ण भाषा दिया, महत्वपूर्ण सेवा किया, योगदान किया और बलिदान किया। अब ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण लोग इस देश को जो सेवा किया है, accidentally were born on the same day. If you take Mahatma Gandhi was born on 2nd October. Lal Bahadur Shastri also was born on 2nd October. Similarly, if you take personalities in this country, you find Bal Gangadhar Tilak, a champion of Indian freedom, is a name to reckon with the country. On the same day, Chandrasekhar Azad was born in Allahabad. Same day. Similarly, Motilal Nehru was born on 6th May 1861. Rabindranath Tagore also was born on 6th May 1961. Similarly, Abraham, I'm sorry, 1861, no. Then, झांसी लक्ष्मीबाई जो महिला है, अभी महिला के बारे में बहन जी बोल रहे थे, मोहिनी जी, झांसी लक्ष्मीबाई ये दिखाया, महिला होते हुए भारत के आजाद के लिए लड़ के 1857 में अपना जान बलिदान किया। उनके लिए हम झांसी लक्ष्मीबाई को आदर करते हैं। उसी दिन में इंदिरा गांधी भी बोलेंगे। इंदिरा गांधी का जन्मदिन भी
झांसी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन 19 नवंबर। ये क्यों कह रहा हूँ, ये लोग देश में चिरस्मरणीय है। As long as India survives, similarly, personalities are responsible for the freedom of this country. Some personalities are responsible for the growth of this country. इस देश इतना हो गया, हम जब कॉलेज में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान में 370 कॉलेजेस बनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू could think about 20 years later how many colleges were necessary. There were 26 universities in 1947. Now we have got 544 universities, including deemed universities. So if this country has developed, हुए तो ये सारा डेवलपमेंट है कारण एक लीडरशिप है, दूसरा हमारा भारत का जनता है। सो आज आप सबको सरकार मिल रही है इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर, मैं दिल से आप सबको बधाई देता हूँ, भविष्य चाहता हूँ अच्छा होना चाहिए। So once again, hearty congratulations to you. Therefore, we should remember Indira Gandhi as a Prime Minister. She was the first lady. क्या बहन जी नाराज है? So आखिर में ये बताता हूँ, Indira Gandhi created history in this country. I was in the government, I was Secretary Government of India 25 years back. 1988 I became Secretary Government of India. I had the privilege to see the materiality much earlier, how Jawaharlal Nehru led this country, Lal Bahadur Shastri led this country, Indira Gandhi led this country, Rajiv Gandhi led this country, all Prime Ministers have led this country. So we had the privilege to learn. So they rendered remarkable service. इतना महत्वपूर्ण सेवा किया है जिनके लिए हम सब आभारी होना चाहिए। सो आज गुरिंदर ने ऑर्गेनाइज किया, दीपक ऑर्गेनाइज किया, कामना जी आए हैं। सो पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं आपको विदा देता हूं। एक बार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। Former Finance Minister of Punjab and spokesman AICC. Okay, thank you very much, Dr. G.V.G. Krishnamurthy, for his very valuable input. Now, may I request Alka Lambaji, she is the Secretary of All India Congress Committee, to please come on dais and share a few very valuable words. Alka Lambaji, please. धन्यवाद। आदरणीय श्री वीरेंद्र कटारिया जी, हमारे गवर्नर पौंडीचेरी और मेरे बड़े सम्मानित हैं आप, मैं आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय वीपी सिंह जी, फॉर्मर गवर्नर सिक्किम, मैं यहाँ पर डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जी का, जीवीजी कृष्णमूर्ति जी का, मेजर दलबीर सिंह जी का, मैं यहाँ पर उपस्थित सुरेंद्र जी का, भाटिया जी का, खासतौर से धन्यवाद करना चाहूंगी गुरिंदर सिंह जी और दीपक जी आपका, कि आपने अपने पिताजी से जो कुछ सीखा है उस सीख को आप हम लोगों के बीच में लाकर हमें उसमें शामिल कर रहे हैं। मैं गुरिंदर जी आपका और दीपक जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है आप अपने पिताजी के कदमों पे चलते हुए जो इंदिरा जी के साथ उनके अनुभव रहे उन्हें हम हमारे बीच में ला रहे हैं। मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी, दो तरीके हैं हमारे सबके पास, इंदिरा जी या उनसे पहले जो भी महान लीडर इस देश को मिले उनके बारे में जानने के लिए। एक तो ये है कि आप लाइब्रेरी में जाइए, किताबें खोलिए, इतिहास में झांकिए और उनके बारे में पढ़ें। और मेरे जैसे कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस मंच पे जो महान हस्तियां बैठी हुई हैं, जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया है, जीवीजी कृष्णमूर्ति जी, वीपी सिंह जी, हमारे जो गवर्नर पौंडीचेरी हैं, भीष्म नारायण जी, आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने इंदिरा जी के साथ एक सफर तय किया है।
तो मुझे अगर दो रास्ते मिले कि मैं लाइब्रेरी में जाकर किताबों में खोजूं इंदिरा जी को, और दूसरा रास्ता कि आपके खुद के अनुभव इंदिरा जी के साथ कैसे रहे, तो मैं ये कभी मौका चूकती नहीं हूं। और मुझे लगता है ये मौका आज आपको भी मिला है कि इनके इंदिरा जी के साथ जो सफर रहे और जिस तरीके का अनुभव रहे, हम उन्हें जाने। यहाँ पर मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगी, मुझे मालूम है कुछ लोग बीच में झपकी भी ले रहे थे, पता नहीं क्यों। मुझे मालूम है कि समाज में काम करना वो शायद आसान है, लेकिन कई बार भाषण लंबे लंबे सुनना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग, मुझे मालूम है, फील्ड से आए हैं। आपको जो यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, मैं आपका तहे दिल से आपको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहूंगी 1995 से जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत कर आई, तो सीधा मैं शक्ति स्थल पहुंची। इंदिरा जी की समाधि जहां पर है, वहां पर मैंने अपना ट्रिब्यूट इंदिरा जी को पे किया। और आज 18 साल में कोई ऐसा मुझे लगता है दिन नहीं होगा, खासतौर से 30 अक्टूबर मैं कहूँ या 19 नवंबर का दिन, जब मैं इंदिरा जी के शक्ति स्थल पर नहीं जाती हूँ अपनी श्रद्धांजलि देने, क्योंकि मेरी जैसी महिलाओं को सिर्फ वहां से शक्ति ही नहीं, प्रेरणा भी मिलती है इंदिरा जी से। क्योंकि मैं राजनीति में जो है एक महिला होने के नाते 20 साल का सफर रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक महिला होने के नाते आपके सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आती हैं कि आपको थोड़ा मुश्किल होता है खड़े रहना मजबूती से। अगर आपका राजनीतिक परिवार का सपोर्ट रहता है, तो शायद आप बचपन से सीखते चले आते हैं राजनीति को, लेकिन मेरे परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं रहा। लेकिन इंदिरा जी से हमेशा प्रेरणा ली। बचपन में छोटे होते कोई किसी से पूछता है बच्चे से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, कोई अध्यापक। मैं बोलती थी मैं बड़ी होकर इंदिरा गांधी बनूंगी। लेकिन बिल्कुल नहीं जानती थी उस समय, ये 1984 की बात है जब इंदिरा जी हमारे बीच में से चली गई, और उस समय मैं सिर्फ 9 वर्ष की थी, 9 साल की थी। और उनका एक इंटरव्यू जिंदगी भर, मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी कुछ घंटों पहले वो इंटरव्यू उनका देखा है। वो इंटरव्यू था अंतरिक्ष में पहले भारतीय, हमारे जो राकेश शर्मा रहे, उनके साथ अंतरिक्ष पे दूरदर्शन पर जो इंदिरा जी का लाइव रहा। और इंदिरा जी का एक ही प्रश्न था अंतरिक्ष में वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री से, राकेश शर्मा जी से, कि हिंदुस्तान वहां से कैसे दिखता है? तो उन्होंने एक शब्द कहा, मेरा भारत महान। सारे जहां से दिखा हिंदुस्तान हमारा। यानी कि मुझे लगा या तो अब हिंदुस्तान का झंडा मुझे राकेश शर्मा की तरह जो है वहां पर फहराना है, और या मुझे इंदिरा गांधी बनना है। मैं सच बता रही हूं, नहीं जानती थी कितना इंदिरा जी ने सहा होगा, झेला होगा, या इंदिरा गांधी बनने के लिए कितना त्याग और बलिदान देना है। 9 वर्ष की उम्र में मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन ध्यान आता कि जाना तो इसी रास्ते पे ही है। लेकिन 20 साल से जब इस रास्ते पर चल रही हूँ, जब मैं कहती हूँ एक महिला होने के नाते चुनौतियां सामने आती हैं, तो मैं वही शक्ति स्थल पे पहुंच जाती हूँ और वहां पर बैठ जाती हूँ। और मुझे ऐसा महसूस होता है मैं उनसे बात कर रही हूँ कि उस महिला ने भी, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, गांधी जी की लाडली थी, गूंगी गुड़िया से लेकर, जीवीजी कृष्णमूर्ति जी ने उनका वाक्य बताया कि किस तरह से गूंगी गुड़िया से लेकर आयरन लेडी तक का सफर उन्होंने तय किया। तो बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। तो मैं यहाँ पर हर महिला को कहूंगी जहां यहाँ पर उपस्थित है, आपको, और मैं तो कहूंगी मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने यहाँ पर बैठ के अवार्ड दिया भी है और वहां पर बैठ के इस अवार्ड को, इस सम्मान को लिया भी है। तो मैं तो दोनों तरफ से भाग्यशाली हूँ, और मैं इसके लिए गुरेंद्र जी और दीपक जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दोनों तरफ से आपने मुझे सम्मान दिया कि इंदिरा जी के नाम से, और आगे मैं बढ़ रही हूँ। और मैं अब ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगी, पर ये वो लाइनें हैं जो मैं शक्ति स्थल पर जब इस 19 तारीख को सुबह थी, तो इंदिरा जी की कुछ भाषण की लाइनें जो है इस देश के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इंडिया ऑफ इंदिराज ड्रीम, तो वो ड्रीम मुझे लगता है कल जो हमें इंदिरा जी की समाधि पर उनकी भाषण के कुछ अंश दिए गए, मैं सिर्फ आपसे उनके शब्दों को शेयर करूंगी। इंदिरा जी का कहना था, जो उन्होंने देश की आजादी के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, उनके लिए देश से अपील की, वही देश, वही इंडिया जो इंदिरा के ड्रीम में था। अब ये देश को जब हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनको मौके आज नहीं मिल रहे हैं, चाहे गरीबी के कारण, चाहे वो बहुत दूर कहीं रहते हैं उनके कारण, या आर्थिक पिछड़ापन है, या समाज में कुछ अंधविश्वास है, या कुछ ऐसे गलत ख्याल है जो कोई ऊंचा कोई नीचा। असलियत यह है कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है,
हाँ, यह सच है कि किसी से ज्यादा अकल होती है, किसी में कम अकल होती है। कोई ज्यादा मजबूत होता है, कोई कम मजबूत होता है, कोई ज्यादा लंबा होता है और कोई नाटा होता है। लेकिन अलावा इसके अब पूरा मौका मिलता है तो कुछ लोग, तो बहुत लोग जितने दिखाई नहीं पड़ता उससे उतना अधिक बढ़ सकते हैं। तो हमें यह मौका अपने सब बच्चों को देना है कि पूरे तौर से उनका व्यक्तित्व बढ़े और हर दिशा में बढ़े, और जिसमें देश का व्यक्तित्व भी बढ़े। देश महान कौन होता है? पहले तो उनको अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है। उनके लिए एकता की जरूरत है। जो आपसी मतभेद होते हैं, चाहे धर्म के कारण हो, जाति के कारण हो, भाषा या प्रांत, कोई और, ये सब चीजें कमजोर होती हैं। इनको गांधी जी नकली दीवारें कहते थे। तो इन नकली दीवारों को तोड़ देना है। हम सब भारतीय एक हैं। अब एक होकर फिर क्या करेंगे? एक होकर भारत को मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही छोटे समय में आपने बहुत अच्छी चीजें बताई और एक बार फिर याद दिला दिया इंदिरा गांधी जी के उन वक्तव्यों के बारे में जिनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, डायस पर बुलाना चाहूंगा श्री दलबीर सिंह जी को। ही इज द सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हिम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। श्री दलबीर सिंह जी। वृंदा कटारिया जी, डॉक्टर बीपी सिंह जी, डॉक्टर भीषम नारायण सिंह जी, माय वेरी डियर फ्रेंड सिंगला जी, अलका जी, भाटिया जी, कृष्णा मूर्ति जी, and all distinguished invitees to today's conference, all the award winners. In a span of few minutes, it's very difficult to describe a huge and a charismatic personality like Indira Gandhi. She was one of the most brilliant political figures of the century. I will only touch upon some of the attributes. Of course, she came from an illustrious family, granddaughter of Motilal Nehru, daughter of Jawaharlal Nehru. She grew in the shadow of her own father, and she assisted him politically as an assistant all through the early years of her life. But of course, she also participated in the freedom struggle. Partly, she took part in the non-cooperation movement. She even went to prison in 1942. She was a very young, fragile girl. She had a very lonely childhood because she came from one of the best known political families of this country, family which participated in the freedom struggle, family which gave India everything what India is today. And in the early 60s, she was inducted as Minister of Information and Broadcasting, and soon after, when her father passed away, and also after sudden demise in 1966 of Lal Bahadur Shastri, the mantle of Prime Ministership fell on her. By choice, by consensus, everyone, there were a whole range of senior leaders in the Congress party at that time, but by consensus everyone wanted only Indira Gandhi to run this country. And when she took over initially, there were a lot of problems. There was a lot of turbulence in the country. We had problems in the northeast, there was uprising in Mizoram, there were problems in Telangana, there was a huge famine in some parts of the country. And it was not easy to run a country at that point of time. Today there are critics who talk about what kind of model we adopted in the 60s and 70s. The model that we adopted suited the era, suited the times. We had just come out of the trauma of partition in the 50s and 60s. Late Jawaharlal Nehru tried to consolidate things here because unity and integrity of country was more paramount. It was more important than only looking at market economy, and because there was no capital markets, there was no market economy, there was no free liberalized regime anywhere to work. And
all the social infrastructure that Jawaharlal Nehru attempted to build, whether it was Bhakhara Dam, whether it was huge road and railway infrastructure in the country, it was all built in the 50s and 60s. And Indira ji took upon the challenge. And let me tell you, no one would have handled it the way she handled it. She was a remarkable woman, a woman of strength, and all through that period of 60s, she steered the country through all these problems. And I've touched upon particular phase of her life. It was a real moment of glory for her, not only for her, but for the whole country. There was a 71. How she steered the 71, which led to liberation of Bangladesh. We fought the war, and she gave us decisive victory against Pakistan. I was a young captain in the army. I was fighting a war also in Bangladesh, and we were shifted to western sector. And let me tell you, towards the last phase of the war, firstly, to begin with, when the operation was being planned, General Manik Shaw went to her and he asked her, how do you want us to plan an operation to capture Bangladesh, to liberate Bangladesh? And here was one Prime Minister who said, look, politics is my art, I handle it the way I think is best for me. And warfare is your art and you handle it the way is best for you. And what a remarkable thing for a Prime Minister to tell an army general, okay, warfare is your problem, you run it the way. We want Bangladesh to be liberated, we want this phase of history to be closed once and for all. And this is how the war began. But let me tell you, towards the end of the war, there were very, very troubling moments. The Americans deployed a huge carrier of 7th Fleet in the Indian Ocean. And that meant a lot of trouble for us. Thanks to Soviet Union. I'm not trying to draw comparisons between, in context of our relationship with the US or with USSR. But with support of Soviet Union, it was Madam Gandhi who sensed this trouble. And I remember, because I was a young captain fighting, and the word had also spread on within the armed forces, we were still deployed on the border, that with support of the US 7th Fleet in the Indian Ocean, it would mean a lot of trouble for the Indian Army. But believe me, it was only a matter of few hours. There were Russian submarines, there were Soviet submarines in the Indian Ocean, and Indira ji, absolutely, matter of fact, in absolutely plain statesmanship words, told the Americans just move the 7th Fleet from there and just get out of there. And this is how we got decisive victory in 71 war. And it called for very audacious level of leadership. You don't have leaders of that caliber. And I think one great thing I would like to remember of Madam Gandhi today is that huge amount of connect she had with the masses. Okay, they can be politicians, they can be leaders, but for someone to connect, I think she had huge connect. That's why I think all the anti-poverty program that she ran, her 20 Sutri Yojana, that 20-point program for elevation of poverty is still, I think, remembered with a lot of reverence all over rural India. Whether you go to Tamil Nadu, you go to Andhra, you go to all these places, still Indira Gandhi is called Amma. Everybody remembers her by Amma, because she really felt for the poor people of this country, the downtrodden, the marginalized, the victimized, people who lived in rural areas, people who live in backward areas, people who had no access to infrastructure. And irrespective of what the critics would say sometimes, the kind of development model that she had chosen for this country, or she had inherited from her father, was just the kind of model, because she needed development with equity. She did not need development which had no sense of equity. And it is her kind of development that suited those times, suited that period of 60s and 70s. And she steered us so bravely, so brilliantly, and she kept the country intact. And some of the huge milestones of her career, if I touch upon, of course, the 71 war, and huge treaty that we signed with Soviet Union, Treaty of Friendship, Peace and Cooperation. Then the Shimla Accord. Shimla Accord still is one of those very, very important documents which define India-Pakistan relationship. If we have to move on from where we are today, it is only on the basis of Shimla Accord, irrespective of what Pakistan claims and says. These are some of the major decisions. And I think she had also left a very, very deep imprint on the international affairs. The way she steered Chogam
In 83, she was chairperson of Chongam, and the resolutions that were passed in Chongam really were reflective of great statesmanship and the caliber of that leader. And apart from that, of course, she abolition of privy purses because it was required. She wanted India to be empowered. She wanted to bring more social justice. She abolished privy purses. She nationalized banks. And in a simple stroke, she nationalized banks. She didn't care about how others would react, how the opposition would feel. But of course, even the opposition, if you recollect in 1971, Vajpayee called her, everybody called her, she compared her with Goddess Durga, and even Vajpayee complimented her for all the strength and audacity that she had shown. She was a remarkable leader, a remarkable woman, and she has shown head above shoulders above everyone else in this country. And I think there are still many moments and times that we miss her, that she could still be part of our current history. And with these words, I like to thank Priyadarshini also once again for having given me the opportunity to speak here. Thank you, ladies and gentlemen. So thank you very much for your very valuable words. Now may I request Shri BP Singh ji, former governor, to please come on the dais. बीपी सिंह जी पूर्व महामहिम राज्यपाल सिक्किम, अभी हमारे डॉक्टर जीवी जी कृष्णमूर्ति कह रहे थे कि हमारे होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, लेकिन इनको आधुनिक भारत का बुद्धा कहा जाता है। इन्होंने बुद्धिज्म के लिए जो किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। आप ही देखिए कि भारत में अशोका होटल में 30 कंट्रीज के इन्होंने बुद्धिज्म पर एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें 30 कंट्रीज के लोगों ने भाग लिया और उसमें जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, थिंकर्स थे, फॉलोअर्स थे, उनको यह इनवाइट किया और उस समारोह की अध्यक्षता की। आप ऑथर है बुद्धा के, बहुत बड़ी किताबें, कई किताबें आपने उसके बारे में लिखी हैं बुद्धा के बारे में, जिनको बुला दिया गया संसार ने, लेकिन हमारे बीपी सिंह जी ने इसको जिंदा रखा है, याद रखा है। ऐसी महान हस्ती आज हमारे बीच में विराजमान है। वर्ल्ड बैंक के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एम्बेसडर रहे हैं इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के। और आप ये देखिए कि इन्होंने महामहिम के पद पर रहकर के तो कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन एक योग्य विद्वान के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया। ऐसी महान हस्ती हमारे बीच में है, उनको मैं आमंत्रित करूं, उससे पहले एक तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए। मैं बहुत दुविधा में हूं कि आज से हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं, दोनों मिला जुला के कुछ कहना चाहता हूं। चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ Pondicherry, Kataria ji, respected Dr. Vishnarayan Singh ji, a close associate of Srimati Indira Gandhi and her confidant for several years, Shri Dalbir Singh ji, my friend Dr. G.V.G. Krishnamurti ji, अलका जी, गुरिंदर सिंह जी, भारतीया जी, कांता जी और प्यारे भाइयों तथा बहनों, मुझे इंदिरा जी से मिलने का मौका मिला जब मैं IAS प्रोबेशनर बना। 1965 में मेरी असम में पोस्टिंग हुई और तुरंत उसके बाद इंदिरा जी वहाँ 66 में प्राइम मिनिस्टर आए, तो उनके इंतजामात के लिए मैं और डिप्टी कमिश्नर, मैं उस जमाने में असिस्टेंट कमिश्नर होता, 66 की बात है, तो देखा उनको, मेरे माँ की उम्र की थी और
वो जो छवि थी उनकी वो बिल्कुल मस्तिष्क में समा गई और तब से उनको कई बार देखने का मौका मिला, लेकिन खास तौर पर 1980 में जब आसाम की क्राइसिस चल रहा था, वो प्रधानमंत्री बनी थी, तो मुझे बुलाई और 10-12 बार इस रीजन के बारे में मेरी बातें हुई उनसे, और उसके बाद उन्होंने मुझे नेहरू फेलोशिप दी, जिसके आधार पर मैंने पुस्तक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ चेंज, द स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बट मोस्ट vivid, exciting feeling that I had was in 1976. I had gone to see off the governor of Assam at the airport. And then Delhi airport was a small thing. It was a VIP lounge, we were sitting. I had seen off the governor and I was coming out. And I found suddenly there was an electric effect. She was not in power. They said, Mrs. Indira Gandhi is going. So everybody was just checking. They had queued up. All the passengers had queued up to greet her, to have a glimpse of her. She was without power. Krishna Ribu, who was a friend of hers, in the same year she had gone to UK and then to Paris. So Krishna Ribu, who was Krishna Tagore, married to Ribu in Paris. I knew her very well. She was telling me that she wanted a quiet dinner in a restaurant. So they booked a table and the French police was guarding her. So they booked another table for the security in a restaurant. And the restaurant had a huge hall she wanted. And she went there with Krishna, only 2 ladies. And Krishna Ribu said that, she wanted a quiet dinner. So somebody shouted, Indira Gandhi. And the entire restaurant, all the persons assembled there got up to greet her. They clapped. There was something in her personality which was so attractive, it was so charming. If Jawaharlal Nehru made an impact on world leaders by his intellect, because he always thought that he knew the world better than any other prime minister or the president. Indira Gandhi made the impact not only because she was a beautiful woman, but because that she understood the dynamics of power politics, and the other side felt that she is a great gritty lady who cannot be cowed down. So there was some awe in her presence. I was imagining what would have happened to you, all of us, if she had just walked into this hall. We would have all just got up. That was her personality. And I compliment Kantaji and her 2 beautiful sons that they are carrying forward this All India National Unity Conference and its agenda. As I was sitting here, my mind was going from happenings in West Bengal, which Dalbir Singh ji referred to in 1971. I was then Deputy Commissioner in Assam at Pittsburgh. I know very vividly that on the 16th of December, when she went there, this place had more than 1 million people. And you know what they shouted? Amar Ma Eseche. Our mother has come, not the prime minister. Amar Ma Eseche. That was the personality. That was called national unity, when you unite people. And I sometimes wonder if India
reunited ever, maybe after our lifetime, maybe in 21st century. What would be the basis of that unity? It would be secularism and constitutionalism. And who put secularism in the preamble of the Constitution? Indira Gandhi. And this nation would gratefully remember her that contribution. Who put constitutionalism in this country? The galaxy of Nehru, Sardar Patel, B.R. Ambedkar, Maulana Azad, Rajendra Prasad and others. And she carried forward and she gave her life for the sake of the unity of the country. Such leaders are very rarely born. When they are born, they change the course of history around themselves. She once said, and in fact, she said that repeatedly, she personally told me this sentence. When I had written something, she said, if you are an Indian, you cannot but be proud. And that is the message. The Indian of all strains of society, each Indian must take pride in that great India. And that was the message. And for that message, she reorganized the northeastern states, and that has given us stability. You know, the northeastern states are today one of the most stable areas of the country. Political stability, economic stability. There is no threat to national security or national integration now in the northeast. And the credit goes to her. She did everything which was under the Constitution to fulfill the wishes of the people of Sikkim when they united India. They joined India. It was under her leadership. And we all know how to keep Punjab a part of India. She gave her life. I do not want to prolong. I have so many memories about her. But I just want to tell you that all the recipients of this prestigious National Unity Award, you must remember that Indira Priyadarshini Gandhi was a leader who worked for betterment of each one of us, for us, for our succeeding generations, and we would always remember her with gratitude. Thank you. Request Dr. Bhishma Nayan Singh Ji, former governor of almost 8 states, to please come on the dais and enlighten all of us with his very, very insightful, probably he is one of the very, very senior most, dignitary with us who can share many interesting things with us. It's always a pleasure to listen to him. Let's welcome with a big round of applause, Dr. Bhishma Nayan Singh Ji. डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी आपके सामने आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे सदन में एक ही गांधी टोपी है, वो डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी। देख रहे हैं आप, लोगों ने इस टोपी का त्याग कर दिया, लेकिन हमारे डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी इस टोपी को बनाए हुए हैं और गांधी जी की मधुर स्मृतियां हमारे दिल में संजोए हुए हैं और इस टोपी की लाज, इज्जत और सम्मान रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो एक बार गांधीवादी विचारधारा को हम आधुनिक भारत के गांधी भी कहते हैं। हमारे डॉक्टर डीवी जी कृष्णमूर्ति कहा करते हैं कि गांधी जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिरूप में एक डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी हमारे बीच में है। एक रिकॉर्ड तोड़ राज्यपाल, 7 स्टेट्स के राज्यपाल, 7 स्टेट्स के राज्यपाल रहे, एक मामला अगर कम नहीं है। 7 राज्यों के राज्यपाल रहना, उसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा से बड़ा राज्य भी था। और हमारी डॉक्टर अभी बीपी सिंह जी साहब असम की बात कर रहे थे कि जहां जहां कभी किसी प्रांत में अलगाववादी शक्तियां सक्रिय हो जाती थी, उन प्रांतों का राज्यपाल एक फायर ब्रिगेड के रूप में डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी को प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी नियुक्त करती।
और वहां की आग बुझाने का कार्य ये गांधीवादी तरीके से करते थे। इन्होंने कभी मिलिट्री की सहायता नहीं ली और कभी सेना को नहीं बुलाया और कभी भी कोई शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अपनी मधुर वाणी, सोच और समझ के कारण ही उन राज्यों को शांत किया। उस समय जयललिता तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी उग्रवादी नेता मानी जाती थी और चीफ मिनिस्टर मानी जाती थी। वो इंसान तो क्या, किसी दूसरे को भी कुछ नहीं समझती थी, भगवान भी दूर भागते थे उनके भय से। और उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल बनकर के हमारे डॉक्टर विश्वनाथ सिंह जी थे। आप ही देखिए, उस महिला को बजाय एक महामहिम के रूप में ट्रीट करने के उन्होंने एक नेता के रूप में ट्रीट किया। पहले तो उसकी पहचान और उसके स्वाद की सबसे पहले कि उनको सबसे प्रिय भोजन कौन सा है, और उनके लिए जो हलवा उन्होंने तैयार कराया वो गदगद हो गई हलवा खा करके, और उनके जो कड़वे वचन थे वो मीठे बहुत वचनों में बदल गए। ऐसे डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी हैं। रशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, तालियां बजा करके एक बार अभी। ऐसा कोई कंट्री नहीं जिन्होंने में जाकर के इन्होंने अपना उद्बोधन नहीं दिया और वहां के लोगों को प्रभावित नहीं किया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे लंदन हो, और चाहे और कोई दूसरे देश हो। ऐसे बाबूजी को पाकर के हम धन्य हैं। वो हमारे उनके संरक्षण में सारा कार्यक्रम चल रहा है। एक बार मैं उनको आमंत्रित करूं, उससे पहले तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करिए। मैं बुला रहा हूं आधुनिक गांधी डॉक्टर विश्वनारायण सिंह जी को आपके बीच में और आपको संबोधित करें, क्योंकि वो पहले बोलना चाहते हैं। Thank you very much. I am extremely grateful to the organizers of this function honoring and remembering India's greatest leader in this century. I wanted to speak first because before Bhisham Narayan Singh Ji, because I know the lot of history that occurred when we were young. In 77, when Mrs. Gandhi lost the mandate of the Indian people, then probably he is the only one leader who was the most close associate, I would call close associate of Indira Ji. Used to see almost every day in the morning. My association actually started with Bhisham Narayan Ji in 77. And even that took place most difficult times in the life of India's greatest leader, Srimati Indira Gandhi. And Bhisham Narayan Singh Ji was the soul, I would call, peaceful voice, not a fire brigade as a friend of mine has used, a conflict resolution person who would calm down the flare emotions and sentiments and really bring a peace, not only peace, but a comfortable journey of Mrs. Gandhi back to power in the shortest period of time, in 3 years. That's what Bhisham Narayan Ji is before you. That's why I wanted to say he is the sole example who made Mrs. Gandhi difficult journey in 77, the shortest journey to power back for Congress and for Mrs. Gandhi. Then she played a historic role in 1980s. Well, but that's the point that I wanted to make to you about Bhisham Narayan Ji. But my friend, a very dear friend, we were together in the parliament, Mr. Varinder Kataria Ji, chairman of this function, and the Lieutenant Governor of Pondicherry, again an honor to us and honor to Punjab, and Dalbir Singh Ji, my colleague and a friend Alka,
very inspiring speaker, and really leading a good cause of women empowerment in this setup. And Krishna Swamiji, Krishnamurti ji, who is another friend of mine for many, many years and a decade, and L.C. Sahib and friends. It's really an occasion, not that every day, no, not every year one should celebrate it. Every day one gets remembered Mrs. Gandhi. I have to make 2 points really, not many. Because they are different. In terms of history, times are always different. In 90s, times are different, in 80s, times were different. But then times define the leadership, or leadership defines the time. It is Mrs. Gandhi who defined the times, who set the course of the times. It is not really the times really build leaders. No, I give 1 example from what Dalbir Singh has already said. For example, if I have to compare today, in the 20th century's politicians all over the world, Mrs. Gandhi outranks in terms of a greatest leader in the world history is only Margaret Thatcher. When both Mrs. Gandhi and Margaret Thatcher met together in London and said that Darbara Singh was then the Chief Minister of State, we were there at that time, I was his political secretary. You know, the Mrs. Gandhi was asked, how do you run your politics? He said, do you run your politics on a consensus, which is a famous word now, these kinds of political scene that we are having all over the world, whether, you know, they have a consensus with the Republican Democrat in America, consensus here in Indian Parliament on various issues. No, Mrs. Gandhi said, no consensus. Conviction is my forte. What I decide, what I get convinced. Conviction is her forte, and she made a history out of that conviction that she really followed and practiced. Whatever area you say. And Dalbir Singh mentioned about that she convinced and got convicted. I would say conviction out of conviction. She really made a greatest history of creating a Bangladesh out of Pakistan. Who could dare at any point of time in the last 100 years to think of creating a new state out of partition, the subcontinent of India by the Britishers? It is Mrs. Gandhi who took that. And similar story, again Dalbir Singh was mentioning, I was about to say, you already said these things. 7th Fleet. And Mrs. Gandhi alone could challenge who? Nixon, the powerful president of America. Challenged in a manner, there are books are written that Mrs. Gandhi dared Nixon, the most powerful nation's president. And remember a time when India was not that empowered nation at all. Dalbir Singh ji, then Mrs. Gandhi, when she challenged Nixon, the President of America, then India was not really a great country in terms of the economic power that you have today. The most poor country. But the question is the leadership issues. She was actually fighting for his convictions. That's convictions is the root. If you see her total profile of political courage all over, it is conviction. And she again reminded of the economic front. Mrs. Gandhi took a daring decisions of not only nationalizing the banks. It was the most difficult. The banks were not then owned by, they were owned by all big business peoples.
There was an ownership between the bank as well as industry. All top industrialists in this country owned their banks. It was the most difficult decision to take. You know, I remember a battle between P.N. Dhar and P.N. Haksar. The Bhisham Narayanji must be remembering those. P.N. Haksar was for nationalization. P.N. Dhar was a secretary to Mrs. Gandhi. What did not really oppose the nationalizations. But ultimately what happened was, the Mrs. Gandhi said it's a political decision that I am taking. Nothing to word about ideological positions of the facts. It is a great story in itself, the kind of decision that Mrs. Gandhi took in terms of economic policy decision making. And similarly again, Dalbir Singh mentioned about the 20-point program. Who could thought of empowering poor people? The first time in the history of India, a 20-point program was launched to empower the poor people with the resources to generate with them, to give them the resources to really have your own life. It's a different story. And the program succeeded in many states, and it did fail in many states of India. But that's not an issue that I'm saying. The point that I want to make of Mrs. Gandhi is that you need convictions to change the world. She possessed that conviction enormously, I would say enormously. Nobody can match. I would really rate Mrs. Gandhi only with, in the present times, with Obama. Why I'm trying to compare Mrs. Gandhi of 1971 and Obama of 21st century, because I don't find any other person. For example, when Obama took a decision to bomb off Osama bin Laden at the lands of Pakistan, most riskier decisions of it took 27 months to really debate whether Osama bin Laden to be bombed off or not to be bombed off at the territory of Pakistan. Took a decision, made a history for himself. Had he failed, the imperial power of America would have gone really unnoticed. The leadership of Obama would have been questioned. But the man behind this, the conviction of Obama is just like Mrs. Gandhi. So I salute her, and the whole world salutes her for her conviction in politics. That is what the leadership is. Nothing else can change. It's a conviction. Thank you very much. Waiting Dr. Bhisham Narayan Singh ji to please come on the dais. सर आपको सुनने के लिए हम सभी बेताब हैं. आपका स्वागत है. कृपया तालियां बजाकर स्वागत करें डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जी.